Hi guys, welcome back to my new video. So today I'll take you all along with me what I do in a day, like a day in my life. So please stay tuned with me and watch till the end. And if you're watching now, please like, share and subscribe. So today we don't have any classes because we have a alumni meet where three of the guests are coming, and they are coming just to motivate us and give some advices regarding. Wait, I'll see the topic and tell you. I forgot what was the topic. Oh, guys, it's not exactly like alumni meet. It's like one day talk on civil service as a career option. So the guests are all alumni. Like they will come and give us some advices, like how can you take this further if you are interested in civil service, something like that. And all of them are from civil servant background. All of them are like SP, CO, I guess. And among them one is woman, and she is from, I think, Daporijo, because her title is very similar. Because I have seen such kind of title in Daporijo, so I think she is a Tagin girl. So उसको देख के और भी मोटिवेशन मिलता है कि इफ़ शी कैन डू वी कैन डू. सो उसको देख के बहुत मोटिवेट हुआ है कि हाँ, हमको पता नहीं था कोई भी, हमको दापो में कोई सीईओ लड़की है हमको पता नहीं था. फर्स्ट टाइम हमको पता चला ये नाम, तो इसीलिए हमसे मोटिवेशन लेगा. एंड देन देखते हैं ये लोग क्या क्या करते हैं वहाँ आके, और हम लोग के साथ कैसे कन्वर्सेशन करते हैं, और हम लोग को क्या समझाते हैं, क्या करते हैं. आप लोग को भी हम ले जाएगा वहाँ और दिखाएगा. कॉन्फ्रेंस हॉल में होने वाला है. एंड नाउ आई एम इन RGU हॉस्टल. ओह, शी केम. Anna came to take me to the conference. So now we are leaving. I'm coming from China. Okay, let's go. So it's Anna's OTT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 T I'm going to do K-pop dance. Yeah, it's her. Come, let's go. We are going to the conference hall for one day talk on civil service as a career option. Yes. Yeah, इतना सुंदर दिख रहा है ये view. Wow. So guys, this is the place where we are going to have one day talk. And वहाँ पे टीचर लोग सब तैयारी कर रहे हैं और हम लोग इतना लेट है. मेरे सर होस्ट करेगा होगा शायद. So guys, I thought we are very early but we are not. ये लोग भी हम लोग से जल्दी आ गया. So guys, हम पीछे बैठ रहा था तो सर जो इतना जोर से सिंह को आ गया बोल के हम आगे आ गया. हम लोग आगे आ गए. ये सर है हम लोग जो हम लोग को बहुत आगे ला दिया. Formally, as a host of today's program, I would like to extend my warm welcome. It is our privilege and pleasure to have you all here. So the Department of Pol Science, the Alumni Association, thought why don't we begin with this novel initiative, because in today's context also, as far as career is concerned, the civil service is one very prospective area where many of our unemployed youth experience toils day and night preparing for this exam. Many of its students, those who consistently work and those who consistently study and those who try to explore what is unexplored beyond their disciplines and beyond their subject, usually cracks civil services experience. हमारा यहाँ का स्पेशली ट्राइबल बच्चों में मैंने ये देखा कि वो माइंडसेट नहीं है कि मैं कुछ बनूं. Now we will be having sharing by Mrs. Atuyeka, who is the Circle Officer of Gitari Circle Tumporijo, Subdivision Upper Subansiri District. So it is my humble request to all the aspirants present here to please pay attention to the sharing of our resource person. We were just like you, sitting in the auditorium and watching someone speak like this. And I used to wonder, and I manifested this because I still remember the old auditorium was in that site. And one speaker was, some alumni came and they were speaking something, and I just manifested that what if I also one day come as a resource person to my own institution, the institution that contributed in my career building. And today is the day
and I can't be grateful enough to Almighty and all my teachers present here. I'm the APCS 2020 batch, and I've cleared this exam in my first attempt itself. And I was the batch of 2016 for my masters in RGU. So firstly, I really feel overwhelmed to have got this opportunity to come to this institution and speak before my teachers as a resource person, and I feel that every one of your students who are present here should dream the same. Dream big and make the dream in reality. And it's all in your hands. You don't have to be intelligent to crack this exam. And me, if I will start my struggling journey, I was never an intelligent person. I was always an average student in my school days. But the only thing that changed in my later life was I became more sincere towards and dedicated towards whatever I do. So that is where from the clarity and focus you get the motivation. And the second one is determination, that is discipline. And the third is work smart and work hard. In the initial stage itself, you don't know why are you trying to pursue civil service. You are not very clear why do you want to pursue civil service. You are just doing it for the sake that others are doing. This, if you're doing this, you won't get the motivation till very far. Because I am very clear that I was very clear because I remember I went to David sir's chamber that time in my third semester I guess, and I told David sir that I wanted to become a social activist. So that was a foolishness out of me. So I said I wanted to be a social activist. Social activist is not exactly a profession. So David sir cleared my vision, and he said he cleared and he said that it's not necessary for you to become a social activist. You can be a social activist in any profession you go. Service is one profession where you can actually serve the public. And I wanted to serve the public. This was my main motivation factor. As in my case, for many others, there could be financial stability, there could be your parents' dream, and many other things. But for me, it was to serve the public. And honestly, it seems very ideal and very idealistic, but for me, it was to serve the public. And this profession, for example, civil service, in administration part, civil service is if you become a CEO in entry grade, you will have to look after every responsibilities in a circle. You can't say, ye mera duty nahi hai. Agar, if the PWD department comes and complains to something, you can't say that this is not my duty, I won't interfere. Or if the PHE comes, water department comes, or if WRD comes, water resource department comes, if any of the departments, कुछ भी circle में कुछ भी problem हो जाओ, everything under the sun. There is a quote, everything under the sun. Likewise, every problem under the circle comes under you. You are the sole responsibility of this circle, and that's why you can never say, this is not my duty or I will not do it. There is a thing where you have to understand that motivation is the only thing that will keep you going. In spite of all the challenges that you will be facing, your motivation will be the only thing that will keep you going. And in my case, like I said, कि मुझे public को serve करना था, and I wanted to make changes in people's lives. And the reality part is that as a CEO entry grade, we don't have financial independence. We don't have a different fund. कुछ अलग से fund नहीं आता है CEO के लिए. We always have to depend to our bosses. Like अगर independent होता है तो ADC, additional deputy commissioner, or otherwise senior to that we have to rely on deputy commissioner कि हमारा जो ideas आता है दिमाग में उनको हम reality execute करने के लिए उनको depend करना पड़ता है. The children were not getting access to any library sources, so I decided to build a library for them. पर मेरे साथ पैसा नहीं था, and आजकल बिना पैसा का कुछ होता नहीं. तो what I did was I collectively, like crowdfunding जो होता है, फंडिंग नहीं लिया, बट इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज मैंने हर डिपार्टमेंट से हेल्प लिया. बी टाटा मोबाइल फ्रॉम PHE डिपार्टमेंट, मैंने UD डिपार्टमेंट से लिया है उनका गाड़ी, उनका बड़ा बड़ा ट्रक आता है ना, उनका मदद लिया. फिर PWD से मैंने उनका लेबर्स मांगा, फिर उनका कारपेंटर्स मांगा.
ऐसा करके मैंने ऑल टुगेदर ये लाइब्रेरी को मैंने अपना सपना को सच बनाया एंड द स्टूडेंट्स आर स्टिल स्टडिंग इन दिस लाइब्रेरी. Students from class 1 to 12 of higher secondary school in Manmao. Condition of the classroom, it wasn't in use, so I converted it into library and all with the help of different departments. So this is my another example. That was my first posting place, Changla, and this is my second posting place in Dumpurijo, Upper Subansiri district. I'm serving as Gesripa Circle CEO. So this is the journey where I have helped the self-help groups to how to make scented candles so that they can generate income for their business. So इनका जो एक फंड आया था गवर्नमेंट की तरफ से, पंचायत का फंड, it was just mere 25,000 rupees. So I thought 25,000 rupees से हम एक रिसोर्स क्या बना सकते हैं जो इनकम जनरेट कर सकता है. Then I thought कोई स्ट्रक्चर तो, फिजिकल स्ट्रक्चर तो नहीं बना सकते बड़ा बड़ा. And then I thought कि scented candles जो है आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है for our generation. Then I trained the self-help groups myself and I bought the resources out of 25,000 only for those self-help groups, and we have generated a double income for these self-help groups. It is about giving you an example कि जहाँ पे will है, where there is a will there is a way. आप जितना excuse करते रहेगा, आप जितना बहानाबाजी करते रहेगा, किसी का कुछ लॉस होने वाला नहीं है सिवाय आपका. Only for yourself. And we say we are doing it for our parents, we are doing it for our this and that, but ultimately everyone is doing for themselves. अगर आपके पास determination and discipline नहीं होगा ना, तो जैसे मैंने कहा था, you will start the page, एक किताब से आप एक पहला पेज तो पढ़ लेगा, पर आप लास्ट तक वो किताब पढ़ने का टिकने तक आप अगर डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन नहीं होगा तो वो कभी सक्सेसफुल कभी नहीं होगा. Because I will tell you my story, because in my case I used to discard my social media platforms like Facebook, but like sir said, you don't have to be serious in civil service exam. But in my case I discarded my social gatherings also, जिससे हमको कुछ प्रोडक्टिव हमको आउटपुट नहीं मिलता था. वो सब गैदरिंग्स को मैंने डिस्कार्ड कर दिया. But it's very foolishness of, it will be foolishness of you if you will discard the technology completely. क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी, चाहे आपका लैपटॉप हो, मोबाइल हो, और आपका जो इंटरनेट है और आपका जो टैबलेट्स है, उसी से आपको भरपूर जो इन्फॉर्मेशन मिलता है ऑन योर फिंगर टिप्स, उसी से मिलता है. तो मेक यूज ऑफ दैट वाइजली, और उसके लिए आपको कहीं में कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने में ज़रूरी नहीं है. इन माई केस, हाँ, जैसे सर ने बताया, आफ्टर 2016 पास आउट होने के बाद मैं आई वॉज वेरी क्लियर अबाउट सिविल सर्विस एग्जाम अप्रोच करेगा. तो 2017 में दिल्ली गया, यूपीएससी कोचिंग किया. देन आई केम बैक, एपीसीएस का एडवर्टीजमेंट निकल गया था. फिर आई केम बैक एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम. बट एपीसीएस के लिए मैंने कुछ ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं किया था. एंड ट्रस्ट मी, वो एक साल जो मैं दिल्ली में रहा था उसमें मेरा डिस्ट्रैक्शन हो गया था. आई डिडंट स्टडी एट ऑल. तो बस कोचिंग जाता था, फिर आता था, वो बुक्स जो देता वो बुक्स को लेके रख देता था. एंड इवन इन टेस्ट सीरीज आई डिडंट स्कोर वेल. आई डोंट यूज्ड टू स्टडी. वहाँ पे नया ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मिल गया था, वो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करता था. एंड दिल्ली में ग्रेजुएशन के बाद बहुत दिन के बाद गया था, तो इधर उधर घूमते रहता था, नहीं पढ़ा था बिल्कुल भी. बट व्हेन आई गॉट बैक होम इन 2017, आई प्रॉमिस्ड माई सेल्फ कि हम जितना भी सीखा है अभी तक उसको हम जैसे भी हो ये फर्स्ट अटेम्प्ट में हमको मेरा खून पसीना दे के हम ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हम क्लियर करेगा. इफ यू थिंक इट्स ओके, आई स्टिल हैव माई एज फैक्टर, अभी तक एलिजिबिलिटी और 7 अटेम्प्ट्स है, हम देते रहेगा. अगर आप ये एनर्जी रखेगा ना तो आपका प्रिपरेशन भी स्लो होगा. थिंक कि दिस इज द फर्स्ट एंड द लास्ट अटेम्प्ट. इट्स नॉट दैट टू डिमोटिवेट योरसेल्फ कि अगर नहीं मिला तो हम कुछ गलत कदम की, ऐसा नहीं है. बट एटलीस्ट इतना मेहनत करो कि सोचो कि ये फर्स्ट एंड द लास्ट अटेम्प्ट है. तो मेरा टाइम टेबल तो ऐसा होता था. आई यूज्ड टू वेक अप एट 6 AM, go in IG Park for running. I come back, I do yoga, and then I study, and then again a break for breakfast. उसके बाद breakfast के बाद फिर पढ़ो. तो it will go on for in my case at least 10 hours तो हम पढ़ता था. And I could do it for 15 hours also. किसी का कैपेसिटी अलग होता है, but still I'll say क्वांटिटी जो हम बता रहे वो मैटर नहीं करता है.
अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज क्वालिटी. अगर आप 1 घंटा का भी पढ़ाई करो उसमें क्वालिटी होना चाहिए. क्वांटिटी में आप फोकस करेगा, आप सोचेगा हम तो 10 घंटा पढ़ के आए. और कभी कभी होता है ना एग्जाम में सप्लीमेंट्री शीट लेके रखते हैं और एग्जाम कैसे किया बहुत कोई बहुत सारा लिख रहा होगा आंसर में, उसके बाद में देखेगा तो वही फेल हो जाता है. तो वो क्या होता है, वो क्वांटिटी में फोकस करते हैं. एग्जाम कैसा था बोले, बहुत झकास था बोलेगा, बट जब रिजल्ट निकलते हैं तो वही फेल हो जाते हैं जो सप्लीमेंट्री शीट लेते हैं. बिकॉज द फोकस वॉज ऑन क्वांटिटी नॉट क्वालिटी. तो क्वालिटी में फोकस कीजिए. गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. ओनली टू नो द ट्रेंड यू हैव टू गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अभी तो जो 2021 बैच का था वो अलग हो गया. एंड all question paper pattern was different. Now the pattern is different. Now the syllabus is completely in adherence to the UPSC syllabus. तो UPSC syllabus का अभी तो काफी वास्ट हो गया, CSET included हो गया, and there are 4 papers plus your optionals. So optionals भी है 1 and 2. तो हमारा समय में क्या होता था, all pattern में 2 optional होता था. Political science भी हम लिया था, which is my paper itself, and sociology. तो अभी ऑप्शनल की जो चीज़ है ना, ऑप्शनल में एंड योर पॉलिटी पेपर जो है, आप क्योंकि पॉलिटिकल स्टूडेंट्स है, हम बता देगा कि आपका जो पॉलिटिकल पेपर है, द वंस यू आर एनी ऑफ द सिलेबस दैट यू आर स्टडिंग नाउ, आप ये नहीं सोचने कि अभी हम एमए के बाद हम सिविल सर्विस का प्रिपरेशन स्टार्ट करेगा तो ये किताब तो हमको यूज ही नहीं आएगा. ये कभी नहीं सोचना है. बिकॉज वो आस्क माई टीचर्स, आई वॉज वेरी सिंसियर अबाउट माई असाइनमेंट्स. अब क्योंकि हमको पता था कि वो असाइनमेंट फ्यूचर में जाके हमेरा कहीं ना कभी आंसर राइटिंग फॉर्म में हम कोई एग्जाम लिख रहा होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम. तो वट एवर योर थ्योरी हो, कुछ भी किताब हम जो आज मास्टर्स में पढ़ रहे हैं फ्रॉम 1st to 4th सेमेस्टर, सब किताब को आप एकदम जी जान लगा के अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, विच विल हेल्प यू इन योर ऑप्शनल एज वेल एंड योर पॉलिटी पार्ट इन प्रीलिम्स एज वेल. तो ऐसा करके दिमाग को वाइजली कैलकुलेट करके आपको अभी से प्रिपरेशन करना है. दो यू आर डूइंग योर मास्टर्स नाउ, थिंक दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विस. उसी सीरियसनेस से आप असाइनमेंट को लिखो, उसी सीरियसनेस से आप प्रेजेंटेशन दो, उसी सीरियसनेस से आप एग्जाम में लिखो जाएगा और गलत रास्ता भी ले जाएगा. अगर आपका गाइडेंस सही होगा तो आप सबसे शॉर्टकट, आप अपना गोल में पहुंचने के लिए सबसे शॉर्टकट आप जल्दी पकड़ लेगा. एंड दैट इज द थिंग. एंड राइट गाइडेंस कैन कम फ्रॉम योर सीनियर्स, जो आपका फैमिली मेंबर्स ने ऑलरेडी क्रैक कर चुका है, ऐसा उनसे भी आपको मिल सकता है. या तो फिर इफ यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस इन हिम और हर, यू कैन गो फॉर कोचिंग इंस्टीट्यूशन. कोचिंग इंस्टीट्यूशन से सिर्फ आपको गाइडेंस मिलेगा. टेक दैट कोचिंग इंस्टीट्यूशन एज योर गाइडेंस. गाइडेंस मिलके आपको पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करना है, सेल्फ डिसिप्लिन आपको खुद लाना पड़ेगा. वो कोई आपको कोचिंग इंस्टीट्यूशन ना आपके अंदर डाल सकते हैं, ना कोई टीचर आपके अंदर में वो डाल सकते हैं. वो जब तक आपका दिमाग में खुद से वो नहीं आएगा, नेचुरली बर्थ नहीं होगा, तो आपको कोई नहीं हिला सकेगा पढ़ने के लिए. बिकॉज यू आर नो मोर ए चाइल्ड कि आपको 24 आवर्स सर्वेलेंस में रखेगा, देखेगा कि पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है. ना कि आपका पेरेंट्स चेक करेगा, ना ही आपका टीचर्स चेक करेगा. सो यू हैव टू बी सेल्फ डिसिप्लिन इन दैट. मोटिव ऑफ कमिंग टू दिस प्रोग्राम इज सक्सेसफुल. थैंक यू. Now we have another sharing. By Sir Tasidaram, who is the Superintendent of Police, Pakistan District, Arunachal Pradesh. Sir, I invite you here, please. In clearing examinations is not only the part. You have to carry on. Life is all about constant changes, and we have to keep on growing, evolve ourselves. And during my tenure time also, I was among our batch, I was awarded that state gold medal due to my meritorious performance during elections. Now we will have an interaction round. We now open the floor for questions. If you have any queries or would like to seek any clarification, please feel free to ask. So my question, ma'am, I wanted to know what are the qualities and skills that an aspiring civil servant must have? First of all, it's discipline. You should have the discipline in your personality. I have a small son, a baby. So my in-laws, they desire for my son to become rich, famous, success and all. But all I want my son is to become a man who will be a good human being and a hard-working one. Because I have seen many people in life who are very intelligent, very, very intelligent and very bright, but they don't possess the quality of working hard or sincerity. It has been truly an inspiring session for us. We hope that we would hear you all in the days to come. So before we conclude, a very quick reminder,
the Alumni Association of Political Science, we remain committed to supporting and nurturing future civil services. So do not hesitate to reach out for guidance or resources. We'll have Board of Tanks by Dr. Nuki Gaming, who is the Treasurer of Alumni Association. We have arrived at almost the ending of today's formal program. So guys, after this session we are having photo session. We just came out after the photo session and मैम के पास ये फ्लावर्स था जो एक्स्ट्रा बच गया था, तो हम मांग गया मैम हमको दे दोगे, तो मैम दे दिया। हाँ, मैं तो पूरा मेरा फ्लावर मांगने ला से फ़ोटो खींचेगा, अभी देखते हैं। और सब लोग अभी लाइन में यहाँ पे रिफ्रेशमेंट बात रहे तो वही ले रहे हैं, और हम बेशरम से मैम को मांग लिया। आई एम सो हैप्पी। सो गाइज़, अभी हम लोगों का प्रोग्राम ख़त्म हो गया और प्रोग्राम में अटेंड करके बहुत अच्छा लगा है। वो मैम से भी बहुत सारा इंसाइट मिला है, सर से भी बहुत सारा इंसाइट मिला है। कितना भी स्ट्रगल करो, कितना भी प्रॉब्लम आओ, आप लोग कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। और हमेशा जब भी फर्स्ट अटैम्प्ट करने से भी हमेशा सोचना है कि इस बार निकालना है। पता है प्रिपरेशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होने से भी ट्राई योर बेस्ट। एंड ओटेम पादुंग सर से ये सीखा है कि वो बोले कि दिमाग को खुला रखो, कुछ भी चेंज आने के लिए सीखो, कुछ अच्छा चेंज करेगा अपना बॉडी में, अपना बिहेवियर में, तो आपके लिए ही अच्छा है। लाइक सुबह जागना सीखो, नहीं जाग सकेगा ऐसा मत सोचो। बहुत सारा वो लोग इंस्पिरेशन दिए अभी। और मैम ऐसा भी बोला है कि आतू मैम कि आप लोग अभी इंस्पायर हुआ है ये मिनट में 5 मिनट, उसके बाद मत भूल जाना। तो हम भी वो इंस्पिरेशन को लेगा और ये वीडियो को हम इसीलिए डाल रहे हैं क्योंकि आप लोग भी लो इंस्पिरेशन। और अभी हम मेरा दोस्त लोग से भी पूछते हैं कि वो लोग को कैसा लगा है एंड दे विल गिव देयर व्यूज़। सो फर्स्ट टू रिजा, आपको कैसा लगा रिजा आज का टॉक? हमको तो बहुत अच्छा लगा है, बहुत इंस्पायरिंग था, गाइडेंस अच्छा मिला है और फिर बहुत माइंड का सब कुछ खोल दिया, लाइक ओपन, सब कुछ ओपन हो गया। अभी हम बहुत इंस्पायर हो गया, अभी हम सीधा पढ़ने जाएगा। सो सिकिन्ना, आपको कैसा लगा आज का टॉक? बहुत अच्छा था। उसके बाद बहुत जो माइंड में बहुत कंफ्यूजन था ना, सब कुछ गायब हो गया। मतलब सब कुछ तो नहीं हुआ है बट थोड़ा चीज़ गायब हो गया और मतलब अभी थोड़ा वे मिल गया हम लोग को, इसलिए थैंक यू। नेहा, आपको कैसा लगा है आज का टॉक? वो सर लोग से मैम लोग से सीख के कैसा लगा सुन के? बहुत अच्छा था आज का पूरा प्रोग्राम। और जितना भी लोग आया है, जैसे कि याकर मैम आया है, तासीदारंग सर आया है, सबका स्पीच इतना मोटिवेशनल था ना। मतलब हम लोग पहले इतना क्लियर नहीं था कि करना क्या है एक्चुअली, बट उन लोगों का स्पीच सुन के थोड़ा बहुत दिमाग में घुस गया कि अब क्या करना है, स्टार्टिंग कहाँ से करना है। तो हाँ, थैंक यू। सो आप लोगों ने देखा ही है सबका ओपिनियन कैसा लगा इन लोगों को आज का प्रोग्राम। एंड ऑल थैंक्स टू आवर डेविड सर, उन्होंने हमारे रिक्वेस्ट पे ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। हम लोगों को उसने ही पूछा था कि चलो तुम लोगों को कैसा लगेगा ये प्रोग्राम, तो हम लोग बोले कि सर ठीक है अब कराइए, हम लोग ज़रूर आएगा, अटेंड करेगा। तो इसीलिए ये प्रोग्राम को बनाया है सर ने और एलुमनी जो भी आया है उन लोग मिलके। एंड वो मैम तो और इंस्पायर किया क्योंकि वो दापो का है एंड लड़की भी है तो और रिलेट कर सकता है। एंड सर तो और भी सर बोले कि उसका स्टडीज़ इतना अच्छा नहीं था, ताशी दारांग सर का स्टडीज़ इतना अच्छा नहीं था और वो जो फ्लुएंट भी नहीं था इंग्लिश में। लाइक वो ऐसा बोला है, वो जब टिल क्लास 12 वो जो इंग्लिश का ग्रामर भी अच्छे से नहीं जानता था। स्टिल वो जो बैकअप जब वो ग्रेजुएशन में आए तो जेएनसी में कुछ हो रहा था बोले, उसके कारण से उसका ग्रेजुएशन अच्छे से नहीं हो पाया। जब यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन किए तभी उसका सब कुछ अच्छे से हो पाया बोला। और वो तभी जहाज़ छोड़ा था वहाँ से स्टार्ट करके सब कुछ सही से अच्छे से किया बोला। तो इसीलिए बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। आप लोग अभी भी जो क्लास 12 में है, ग्रेजुएशन कर रहा होगा, वो लोग सोच रहा होगा कि लाइक हम लोग तो इतना छोटा है, कुछ नहीं है। हम वही बोलेगा कि आप लोग ट्राई करो, ट्राई करने से सब कुछ होता है। और ये एपीसीएस यूपीएससी में जो भी है हम लोग का लेवल वाला ही आता है। ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस अलग दुनिया का कुछ आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए आप लोग अगर करेगा तो होगा। एंड हम भी वही इंस्पिरेशन लेके जाएगा और ट्राई करेगा। ट्राई करने में तो क्या है ना, अपना बेस्ट दे के ट्राई करेगा। अगर नहीं होगा तो कुछ नहीं, लाइक दे सेड नहीं होगा तो कुछ नहीं, बट इफ़ यू आर गिविंग योर बेस्ट और इफ़ यू आर ट्राइंग वंस प्लीज़ गिव योर बेस्ट, ऐसा बोला है उन लोग। और जस्ट टाइम पास का ट्राई मत करो, जो कि हम लोग का यहाँ का स्टूडेंट लोग बहुत टाइम पास का ट्राई करते हैं करके। सो गिव योर बेस्ट बोला है, तो इसीलिए हम भी बेस्ट देने ट्राई करेगा। ठीक है, चलो तो ये व्लॉग को यही ख़त्म करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। क्या करना है? पढ़ो, पढ़ाई लिखाई करो, या लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर एकदम दो। एंड ऑल द बेस्ट सब एस्पिरेंट्स को जो अगर दिसंबर 15 में एग्ज़ाम दे रहा होगा तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से देना एग्ज़ाम। एंड ऑल द बेस्ट टू मी ऑल्सो।
तो और जिस चीज़ का यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम भी है एंड वो एग्ज़ाम भी है, सब लोग अच्छे से मिला के देना। मेरा तो यूनिवर्सिटी का भी एग्ज़ाम है, पीसीएस भी देना है, दोनों मिक्स। देखते हैं कैसे मैनेज करते हैं। विल ट्राई माई बेस्ट एंड देखते हैं क्या होता है। तो आप लोग स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।